Good evening. Thanks a lot for staying with us here at CNN News 18. I'm Ridhima Bhatnagar, wishing all our viewers a very happy Dussehra. We're beginning this broadcast with some breaking developments now coming in. And this is news coming in from Israel, where you have the French President Emmanuel Macron, who is on a visit to Tel Aviv in Israel. We're now getting the joint statement that has been issued by the French President Emmanuel Macron and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The French President Emmanuel Macron, in fact, has proposed an international coalition against Hamas. He's called for decisive relaunch of Palestinian peace process. As we pointed out, the French President Emmanuel Macron is in Tel Aviv for a solidarity visit. Macron's meeting with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently underway. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reiterated that elimination of Hamas is their main objective. The Israeli Defense Minister said that Israel is preparing for a multilateral operation on Hamas from air, ground and sea. There is a battle here between the axis of evil led by Iran, Hezbollah, Hamas, Houthis, and there's the axis of the free world and the moderates who want to bring the world to the progress and prosperity of the 21st century. This is the battle. It's engaged now. The test for the West and for civilization is Hamas. If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. So if Hamas wins, if Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own. It's Europe's battle. It's America's battle. It's civilization's battle. It's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world. I want to thank you, Mr. Prime Minister, not just for your time, but because I'm lucid about the fact that this fight against terrorism is obviously a matter of existence for Israel, but it's a matter of existence for all of us. This is why we discussed together, and I just reminded this issue, but I consider that this is an international coalition in order to fight against these terrorist groups that we have to build. I just reminded my people in my language what we discussed about fight against terrorism, humanitarian action, rules to be respected, but as well political process. And obviously I warned against any escalation, and I want Hezbollah and some other regimes not to be part of what's happening. Let's also now bring in our colleague Siddhant, who's joining us on the broadcast. Siddhant, we do know that the French President Emmanuel Macron is on what is being seen as a solidarity visit to Israel. He's had multiple meetings with the President and the Prime Minister as well. Give us the big takeaways as far as this joint address is concerned. Well, yes, that's right. In fact, Emmanuel Macron also joins the club of a few leaders from the Western Bloc to visit Tel Aviv and perhaps to meet Prime Minister Benjamin Netanyahu. Now, look, right now there is a high possibility of perhaps West Asia is at a risk of entering in a situation of a regional conflict, given the China deploying 6 warships in the Middle East, the way Russia and China have been taking positions, talking more about two-state solution, more about ceasefire and humanitarian corridor to Gaza, not condemning Hamas. Some geopolitical observers are even calling actors of evil to the 3 countries, perhaps coming together in these times, Iran, China, and Russia. So this is not only a war between Hamas and Israel anymore. It is at a risk of becoming a regional conflict, and perhaps that could have a larger geopolitical ramification. And that is perhaps has been highlighted by Benjamin Netanyahu during a press conference that he did with Emmanuel Macron, that if Hamas wins, then it would be a threat to civilization. If Hamas wins, then it would be a threat to whole of Europe. And that is perhaps how Israel is portraying the threat, and that is to an extent a reality also which Western Bloc feels.
And this is a reason that they are coming in Okay. solidarity with Tel Aviv and standing shoulder to shoulder with the people of Israel. Back to you. Okay, Siddhant, we'll have to leave that conversation there. Keep a close eye on all those developments for us. Let's also now get you some ground reports. Our colleague from News 18 India, Neeraj Kumar, continues to be on ground zero. He's filed multiple reports for us. Let's take a look. न्यूज 18 इंडिया से हम और हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आ गए हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन, इजराइल की सीमा से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग महज 500 मीटर की दूरी पर घुसे हैं वेस्ट बैंक में। और जब इजराइल से आप वेस्ट बैंक में घुसते हैं तो यहाँ की तस्वीर आपको बिल्कुल अलग हो जाती है। कितना विकास दोनों के बीच में है वो फर्क यहाँ साफ दिखता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये सड़कें जो हैं फिलिस्तीन की हैं, वेस्ट बैंक की हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरा फ्रंट खुल सकता है पूरी लड़ाई में। हमास के खिलाफ जो इजराइल की लड़ाई है, पहला फ्रंट गाजा में है, दूसरा फ्रंट उत्तर लेबनान बॉर्डर में है और तीसरा फ्रंट वेस्ट बैंक में खुल सकता है। लेकिन अभी हमें दिखाने का मकसद ये है कि दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से आपको दिखाते हैं कि इजराइल में जहां हमारी गाड़ियां बहुत रफ्तार से भागती हैं, यहाँ क्या स्थिति है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में गरीबी बहुत है, गाजा में बहुत गरीबी है, पर कैपिटा इनकम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई तुलना नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ देख सकते हैं, चाहे इमारतों की बात करें, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, अच्छी अच्छी इमारतें आपको इजराइल के अलग अलग दूसरे शहरों में भी दिखेंगी, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वेस्ट बैंक का वो बिल्कुल अलग दिखता है। गरीबी है, बहुत विकास नहीं है। हवाई हमला लगातार गाजा पे कर रहा है इजराइल और दूसरी तरफ जमीन से भी मार कर रहा है, लेकिन अब तक जमीन से घुसा नहीं है गाजा में। ये उस लोकेशन की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो इजराइल और गाजा के बॉर्डर पे है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तोप टैंक बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ सारी तैयारी, और यहाँ से बीच बीच में हमला किया जाता है। जब लोकेशन का पता चलता है तब हमला किया जाता है। और ये देखिए, तमाम जो मिलिट्री की गाड़ियों के अलावा जो तोप में गोला भरा जाता है वो भी यहाँ से आपको दिख रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आपको बीच बीच में। ये बहुत सेंसिटिव लोकेशन है तो हम आपको दिखा नहीं रहे। करम आपको इधर से दिखाएंगे, बैक साइड से इधर आपको दिखाएंगे। इधर और लोकेशन हैगा, मिरर डाउन लाइट ऑफ, मिरर डाउन और लाइट ऑफ करके, क्योंकि बैक साइड आपको यहां भी कुछ लोकेशन दिखेंगे। ये सड़कें सेंसिटिव हैं क्योंकि सबसे नजदीक की सड़कें हैं, हाईवे है जो इजराइल गाजा बॉर्डर पे है। यहां भी पेड़ों से ढक के बहुत आर्मी के लोग हमें दिखे थे। इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं। हम लोग इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हैं, रमल्ला के नजदीक हैं। और आपको बता दें कि कई क्रॉसिंग होते हैं। एक क्रॉसिंग हमारे पीछे में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। वहां से हम प्रवेश किए हैं, जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहा है। उधर इजराइल है, जो आपको इजराइल से हम लोग वेस्ट बैंक की तरफ प्रवेश किए हैं और रमल्ला थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरे फ्रंट के तौर पे खुल सकता है। आपको दिखा दें, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जब दोनों सीमाओं के बीच में तनाव बढ़ता है तो इधर से आना जाना होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, और ये गाड़ियों के मूवमेंट के लिए है। जब इजराइल के लोग इधर नहीं आते, लेकिन पैलेस्टीन के लोगों को उधर जाना होता है, तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। आमतौर पे इजराइल के लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन ये स्ट्रक्चर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए बनाया होता है जब तनाव की स्थिति होती है। और इस वक्त देख सकते हैं आपको ये तमाम जो शहर दिख रहे हैं, इसमें इधर इजराइल के शहर दिख रहे हैं, वहाँ भी सामने में इजराइल है, और इधर आपको पैलेस्तीन का शहर दिख रहा है, यानी ये वेस्ट बैंक का शहर है। तो हम हर जगह से आपको रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। तनावपूर्ण माहौल में हम वहाँ तक आपको ले जा रहे हैं जो इजराइल के बॉर्डर से लगते हैं। तो गाजा का ही एक दूसरा हिस्सा जो है वो वेस्ट बैंक है और ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों का बॉर्डर अलग अलग है। वेस्ट बैंक अगर पूर्व में है तो गाजा बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है इजराइल के। और इस वक्त हम लोग
वेस्ट बैंक से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर क्रॉसिंग करके हम लोग पहुंचे हैं।